Yeah, the session is live now. Okay, I can see. Anish sir will join shortly. So I hope you would have seen that pinned video. In that video, we have given the complete information about our GATE 2026 and 2027 courses. So first you can watch that particular video, and after that, watching that particular video, if you are having any other doubt, that you can ask. Okay. So this session is for GATE 2026 students and 2027 students. If you are someone who has attempted GATE 2025 and you are having any other query, then that query we will be taking in some other session. This is mainly for 2026 students only. Okay. Let me. So yeah, yeah. Yeah, Niranjan, yeah, hi. So briefly, I will tell you about the course. Briefly, only I'm gonna tell here. Okay. So just one second. So I hope I am presenting the screen. Let me just confirm. Guys, just let me know if my screen is visible or not. Yeah, I guess it is visible now. Okay, so briefly, I'm going to tell about the course. Otherwise, you can see the video as well. So there will be complete video lectures. Recorded video lectures would be there. More than 800 hours of content would be there. You will be getting the personalized doubt solving. You will be added to the WhatsApp group where you can ask your technical, non-technical doubt. Also, you can ask in the DM as well. So these are the doubt solving group that we are already having. You can see, like personally, we clear all the doubts and like every doubt we take there within that particular day itself. Neatly written lecture PDFs you can get. You can check the quality of the lecture PDF on Telegram group. One PDF will be printable, other would be the slides. That if you are someone who is studying from iPad or tablet, so it would be helpful for you. So lecture PDF also you will be getting. Along with that, there will be assignment problems and solution to all important PYQs we will be doing in the lecture itself. Okay. Then there is a test series. In test series, we are framing the problem from each particular topic of each chapter and each subject. So a lot of questions you will be getting, so you wouldn't have to refer to any other resource for problem solvings. And the thing is, each particular test series, each question has been there with the video solution. So we are making the video solution as well, and there will be very less chances of the error as well, because we ourselves framing the problem and also we are giving the video solution as well. So there would be no error in the test series, and the problem will be totally new. Those problems will be totally new. These are not PYQs. So these are totally new problem, and you can check out the quality of the problems on YouTube itself. Along with that, there will be personalized guidance if you are having any technical, non-technical doubt. Along with that, we will be arranging one-to-one call session as well, where you will be like asked what all things you need to cover in a certain time, and after that, we will be reviewing your performance, and the cycle will keep on going. So that one-to-one guidance will also be there. And near Gate 126, we will be uploading the revision videos as well.
Along with that, there will be full interview preparation. So after the gate examination, there will be IITs who will be asking you, who will be taking your interview for the admission. So that particular preparation will be done by us only. You wouldn't have to refer to any other resource. Along with that, if you are someone from tier 1 or tier 2 college, and if VLSI companies are visiting your campus, then you will get the complete doubts. You will get the complete placement course as well. That is for analog profile and digital VLSI profile. So everything that is required for analog and digital VLSI profile, that would be also there. And if you are someone who is enrolling for 2027 course, then if till gate 2027 examination, whatever the course we launch, all the access you will be getting if you are enrolling for gate 2027. Okay. The next question: why should we trust us? Why should you trust us? So a lot of testimonials are there which you can read. If you want to read, you can go and check out the comment section as well. You can read those testimonials, and if you don't want to trust on the words of other people, then you can just go and check out the free content. So a lot of free content is available there on our website. So not on the website, on YouTube itself, there are a lot of free content available. If you are someone who is a dropper, you can check out the content of EMFT. If you are someone who is starting AFS, you can check out the network analysis concepts, or control system is also there. EMFT for electrical is also there. Along with that, partial content are also there from digital electronics, analog electronics, power electronics, and MOSFET, and all those partial content are also there. Talking about the courses, so we are having subject-wise courses for each subject. Along with that, there is non-core combo, which will cover network, analog, control, digital signals, mathematics, and aptitude. Then there is a core combo for EC, core combo for electrical. Okay, and finally, full course we are having for gate 2026 and for gate 2027. Okay, so these are the courses that we are having. Now, pricing, like I don't think anyone would be giving the courses in this much low price. If you drop the funding companies, they can drop the prices, but I don't think anyone would be giving the courses in this much low prices. You need to apply the code Titans 15, which will be applicable till 20th of Feb, and it is there for first 100 students only. Okay, it would be there for 100 students only, and final price for gate 126 course is roughly around 12.5k, and you can read the prices. I don't think anyone would go below than this. And for full course of gate 127, the price is just around 19,000. So these are the prices. Yeah, and the language of the course will be in English, and Hindi people can certainly understand because we are from North India only. So हिंदी आराम से बोल लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा. जब पढ़ने लगोगे तो हिंदी इंग्लिश that wouldn't matter. Everything would be the same. Okay, once you get into the concept, you wouldn't even know which language I am speaking. Either it is Hindi or it is English. Okay. Video lectures are recorded. If you are enrolling for 2026, then your access will be till 31st March 2026, and if you are enrolling for 2027, then access will be till 31st March. What will be the device limit? So for the device limit, you can you can watch the video at one time in two devices. One would be PC, one would be mobile. At one time means like at the certain time. Let's just say at 3 p.m. I'm watching on PC. At 3 p.m. only I can watch in mobile, and login can be done in any number of devices. Okay, login can be done in any number of devices anywhere, and EMI option are also available. Okay, so this thing I have already told how to purchase and access the course. You just need to go to the website. You just need to visit the website, and there you can purchase and the course. You need to log in first. Okay, so yeah, that's it. Briefly, I have given the complete information about the course. Now, if you are having any other query, you can ask us. Yeah, like if you have any like course related query, right, by queries, you can always message. I will pin the number. You can WhatsApp at that number. If you have any doubts like how to purchase and how to buy, you can WhatsApp at the number. Just pin that number. Any scholarship test? No, no scholarship test as of now. If you are we can bring something for gate rankers. If you are saying you are a dropper and you have already given the gate, so if you have performed decent enough, we can bring something for you. Okay, but as of now, there is no scholarship test. इस बार गेट इसी पेपर अच्छा नहीं गया मिडल जान सकता हूँ या यू कैन टेक अ ड्रॉप रोहित चक्रवर्ती यहाँ पहला ड्रॉप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इतना अच्छा नहीं गया है और लोअर एनआईटीज मिलेगी तो उससे अच्छा है कि ड्रॉप ले लो आप Anish, you take the queries, I will come. Okay. Okay, yeah. 1 year back, I took Bajis coaching. Still, I'm facing the crack. Chennai, then it might be the reason. Like one thing or the other, right? One mismatch may happen. Like either you were not able to understand those concepts better, or like your educator, right? Educator was not that like educator was not able to explain to you that much better. So you can take another year drop. Okay, if you want. Like if you are not a dropper, if you are a final year student, then definitely you can take a year drop. Okay, because sometimes it takes more than 1 year to crack the gate examination. And the second year complete network from to complete network from Ravi, see, like
completely free we won't be able to provide. Next you can start with either control or digital. You can start if you are from EC, you can start with digital. So if I start EC, can I complete the whole yes, you can definitely. If I start, if you Kratos, if you start now, definitely you can complete the whole syllabus for EC. Go for control. Control करवा दिया भाई, damn signal communication control वगैरह करवा. अच्छा, he is asking the हाँ कहाँ कनेक्शन है तो मैं बोला इधर कंट्रोल और डिजिटल, एनी वन यू स्टार्ट सर. yeah, you will Yes, get yes. Yogeshwar, you will get the access to placement course as well. If you are weak in Ravi, if you are weak in mathematics, then you can at least watch the mathematics playlist. First, 3 chapters are there. 3 chapters I have covered. So from there you can follow the mathematics at least. But he has covered the analog course. He is not weak in mathematics Or because he has then, already covered that. so then So you can start with the control one. So also he has covered the network course as well. So he can go for control systems or you can go for digital digital, electronics. Before anything. control, maths is very important. How maths is important in control system and how maths is important in digital electronics. I don't think there would be a single concept of mathematics that will be used in digital electronics, Yeah, neither in yeah. control. थोड़ा लीनियर अलजेब्रा Uh, यूज होगा, लेकिन वैसा लीनियर अलजेब्रा कंट्रोल सिस्टम का लीनियर अलजेब्रा ना वही ना दोनों. डिजिटल में कुछ ऐसा कुछ डिजिटल में तो भी मैथ्स नहीं है कहीं यूज नहीं आएगा, डिजिटल में कहीं यूज नहीं आएगा मैथ्स. 1 0 की भैया. कैलकुलेशन में कहाँ मैथ्स. मेरा देखो रोहित, अगर तुम्हारा वो प्लान है तो कर सकते हो ऑफलाइन. वैसे मैं पर्सनली उतना ऑफलाइन प्रेफर नहीं करता क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज्यादा टाइम जाता है. इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू प्रेफर ऑफलाइन देन यू कैन गो फॉर दैट ऑब्वियसली. सो डू यू हैव देखो बोथ? यार, यस. ऑफलाइन, देखो यार, मैं बोलना नहीं चाहता, क्या मतलब आपको क्या लगता है? अब आप एक बार, अब मैं आपके पास मेडी जी ऑनलाइन होगा, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, आपके पास एमई ऑनलाइन है, ठीक है, हमारा ऑनलाइन कोर्स आपने देखा है, आपको पता होगा डिफरेंस, ठीक है, बस डिफरेंस केवल एक है प्राइस का, और भी डिफरेंस है, वो सभी देखे जा सकते हैं. तो कहाँ आपको लगता है कि वहां पर ऑफलाइन जाके कुछ बेहतरीन मिल जाएगा? मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, आपको जाना है ऑफलाइन तो जा सकते हो, बट कहीं मतलब that would be something that I wouldn't recommend. That would be the last option in my life, that I would go to some other coaching institute offline. ठीक है, मतलब या सबकी अलग चॉइस है, आप सोच सकते हो, बट मेरा फ्यू हम दोनों पीपल का नहीं आ गया. हाँ मेरा तो पूरा सेट है भाई. मैं कभी अभी ऑफलाइन कुछ कर ही करूंगा नहीं मैं. मैं एक और प्रिया चीज से. कभी अगर हम हाँ खुद बोलो. ऑफलाइन स्टार्ट करें तो भी मत आना. मैं तो हाँ, यही हाँ, कहता मैं हूँ. तो कभी करूंगा नहीं स्टार्ट. और तू तो तुझे करना तो कर. मैं तो कभी नहीं करूंगा. प्रिया, यस वी हैव bi-weekly 1:1 meet Google Meet session where we discuss with our students like we give few targets like let's say finish the first 3 chapters within the next 15 days, something like that. We have those Gmeet sessions as well as we talk with WhatsApp. We have a WhatsApp number, so we talk. Sometimes we talk in WhatsApp as well. That if you are having some technical, non-technical doubts, those also we clear in WhatsApp. सो गोल सेटिंग सेशन वगैरह वो सब सेकेंडरी चीज होती है. दीज आर वेरी सेकेंडरी थिंग्स. फर्स्ट थिंग वुड बी दैट आई विल गिव द टास्क, बट विल यू बी एबल टू कंप्लीट दैट? दैट वुड बी द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, so that's the more important part, and certainly everything, goal settings, everything will be done. Those are very secondary things, so those are done like in a very good manner, but the first thing is you need to study, so that thing should be there. Okay. तो ये फ्रॉम वेयर 40 मार्क्स आते हैं भाई. कितना रैंक तो देखो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन से अप्रोक्सीमेट. हाँ बोल. नहीं नहीं, you can Like approximately if you are above 48, then as Himanshu said, I think so you will be safe for IITs. That only we can say, but rank we will not be and able to as say. of now, like, we can drop the queries of gate 125. We Okay, can yeah, bring another session for 125 only. yeah, yeah. So this is only for Uh, 126 and 127 students. how many days can I complete control system? So if you study 2 subjects in parallel, right, it should take you maximum 40 days. 2 subjects if you are studying in parallel, maximum 40 days. If only you are studying control, then 20 days. Gate 116 and TI campus, what subjects should I complete first? Go for network first. Okay, complete network analysis first. Network and analog, then you can complete network and analog. I have studied GATE EC. How should I prepare for ESE? Now my basic concepts are clear. Over what should I focus on? So whatever the subjects that you have left, that you can prepare. Okay. Louis de Broglie, if you're confused between gate and placements, why not prepare for both? Why not try for both? Okay. If you're not, what I will say, if you prepare for gate, right, automatically you will be preparing for gate placement as well, because they are in the interview, they will ask you something technical only, right? They will not ask you something non-technical. Guidance ही की है, देखो पढ़ाई करनी है. There is only one guidance, that is you need to study. Rohit, there is only one guidance. You need to study. Okay. So that's it. That's the only guidance I can give.
and what you need to study, how you need to how you need to study, and when you need to get started. So when you need to get started, that is today. Today you need to get started if you want, if you are preparing for gate on 26. And how you need to study, get started with network analysis. After that your own strategy will be made. The thing is, we feel like that, sir, kaise padenge, kya padenge. The doubt would come only if you are not studying. When you start studying, no doubt will come that how to proceed in the preparation, how to manage the time, sir, how to be dedicated enough, sir, how not to waste time. All these queries will be answered on your own once you get start studying. Once you start studying, so answer of all the queries is only one, that you need to study. That's it. And which subject you need to start from, that is network analysis. Niranjan, I am from E, but I prepare. So Niranjan, right? First of all, you have to relax a bit. I think you are like too much of an overthinker, which most people are. Don't overthink. Relax. And this sleep problem, if it should not come just before your examination. You should have prepared like 1 week, 2 weeks before. Have a good sleep cycle. That every day I will sleep at 12 p.m. only, not after, not before that, so that your brain is programmed. So if you mess up with the sleep cycle, some those problems will come. Contact. Okay, Bhupati, I will just pin the number. If you are having any doubts regarding how to purchase the course and regarding the course content, you can WhatsApp in this number. वाती देखो, नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो. यू कैन कांटेक्ट ऑन द, you can just message on the number, or you can just ask the queries here only, no? Yeah, you can ask your queries here You can only. ask queries here only. Like, you don't expect that we will be on the call and I will be explaining you anything about Yeah. the course. I have already explained about the course, no? So if I'm on the So call and talking about the course, that means I'm just getting you into the course, and that I don't want. If student want to purchase it, then they can purchase. If you want to study from somewhere else, you can study from somewhere else, and if you want to study from YouTube, you can study from YouTube. And if you are having any specific query about our course, you can just write down or message on that particular number. That's it. yeah, if you just message hi, then I will not be able to reply. Right? You have to specifically message what is your doubt. If you just message hi, then that is I don't have time to reply to that. Or if you call, right, I will not receive. So because I don't receive calls here, so you'll not be able to call in this number. Just ask your queries. What is your query on the WhatsApp? I will be able to reply. सर मेरा एक सब्जेक्ट हो गया नेटवर्क, देन मेरा थर्ड सेम के एग्जाम आ गए तो 1 महीने छूट गया. सीजीपीए तो इतना आ गया, आप सिग्नल शुरू कर दिया, नेटवर्क फिर से ट्रैक पे कैसे लाएं, साल क्वेश्चन तो बन गए थे. ठीक है यार, नेटवर्क के सवाल कर लो. यू गेट स्टार्टेड, सो यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस. वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, देन इट विल कम ऑन ट्रैक बाय इट्स ओन. Okay, just start solving the problems. Yeah, Pavan, it is more than enough. Okay, it is more than enough. ट्रांसलेशन से स्टार्ट करो, मॉर्निंग मैच. नहीं, 3 से मत स्टार्ट करो. हाँ रोहित, अभी के लिए एप्टीट्यूड यू कैन स्किप. एप्टीट्यूड अभी करने की जरूरत नहीं है. मतलब आपने इस बार एप्टीट्यूड देखा ना, जो बंदा एप्टीट्यूड प्रिपेयर, लाइक इफ समवन वुड हैव प्रिपेयर्ड एप्टीट्यूड, देन आल्सो लाइक दोस इंग्लिश क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चंस ही वुड नॉट बी एबल टू डू, राइट? सो एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिले करो. एप्टीट्यूड लास्ट में कर लेना. एप्टीट्यूड कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना. एप्टीट्यूड कोई सब्जेक्ट नहीं है. Made easy or second or other else which way I go best or instrumentation. For instrumentation, I haven't seen any book, but I guess both would be good. Okay, लेकिन instrumentation का कोई बुक कभी हमने देखा नहीं है यार, तो बोल नहीं सकते. लेकिन दोनों पब्लिकेशन अच्छे हैं, तो दोनों का ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से. जिसका प्राइस कम हो आप वो खरीद लो बस. बाकी मैंने कभी रिव्यू नहीं किया, ईसी इलेक्ट्रिकल का किया रिव्यू बस. अचीवर, हाँ बिल्कुल, तुम यू कैन स्टडी एट नाइट. जस्ट मतलब एकदम पूरा रात मत कर देना, मतलब 1:30 ऐसा रखना, क्योंकि पूरा रात करोगे तो अगर तुम्हारा इफ यू हैव सम कॉलेज और समथिंग, देन यू लाइक स्लीप साइकिल विल बी टोटली गॉन. सो यू डोंट वांट टू मेस अप विद दैट, राइट? डोंट गो बियॉन्ड 1:30 AM. Yeah, Ganesh Reddy, yeah, you prepare for GATE. No doubt you can prepare for GATE. Okay, placements in VLSI domain. How would you get placements in VLSI domain if you are someone from tier 3? Like, I don't think any company would be visiting your campus. If any VLSI company is visiting your campus, that means you are not in tier 3 college. You are at least in tier 2. Okay. Sir, I'm left with EDC communication only for GATE 2026. I want to study from you only. So since there are few months left for EDC to start, please suggest me few resource for question practice. Question practice के लिए you can take our test series. That would be good enough question practice. Achiever, like we recommend our students is like there is too much time waste when you try to make your own notes. So we provide printable notes as well. So we tell our students to
take the printout of those printable notes and annotate on that, do the annotation on that itself, so that you can save your time and not make your like total own notes, right? That will save your time. So that is how you can efficiently watch a lecture. So now, right, if previously you were spending 2 hours to watch a 1 hour lecture, now it will take you 1.5 hours, something like that. So you will save the time there. So that is how you can efficiently study. Thank you, Pawan. Thank you. No, okay, we will not teach for any ESE subjects for now. Nothing from ESE. Perth, you should study. You should start studying. That is how you should proceed. Like you can, if you have not studied anything, you can start with the first subject, that is network theory. Okay. Problem solving course, Aditya. For now, we don't have any plans for the problem solving course this year. Okay. For now, we don't have any plans. 2 दिन तक अपने वीकेंड्स के इसी में बहुत सारे क्वेश्चन के भी से रोहित, हाँ मतलब मैंने अपने टाइम पे तो कॉमन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाए थे, शायद हिमांशु आल्सो डिड द लाइक पीवाईक्यूज ऑफ कॉमन सब्जेक्ट. सो एटलीस्ट मतलब पीवाईक्यू जब कर रहे हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक मेनी स्टूडेंट्स आस्क फ्रॉम वेयर टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, फ्रॉम वेयर टू फाइंड द क्वेश्चंस. लाइक already there are so many PYQs of the common subjects, INECEE. So I don't know how you guys are able to finish all the questions, all the PYQs. PYQs इतनी जल्दी नहीं होते, ठीक है, धैर्य से किया करो PYQs को. Pawan, daily 2 subjects. You can take daily 2 subjects. If you start, right, if you're just starting, then you can start with only 1 subject, then you make it 2 subjects. कुशाग्रा BARC के लिए वीडियो बना दिया यार कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, चैनल में चेकआउट कर लो आप, या फिर गूगल या फिर इंटरनेट पे लिख दो, यूट्यूब पे लिख दो कि BARC प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्रेप फ्यूजन हिमांशु अग्रवाल, आ जाएगा वीडियो, ठीक है, उसमें बना दिए. नहीं आदित्य नारायण, कोई ऐसा असाइनमेंट्स का कोई अलग से ऐसा कोई कोर्स नहीं है. असाइनमेंट्स के लिए हम PDF देते हैं ना, उस लेक्चर का PDF देते हैं, उसके अंदर सारे असाइनमेंट्स डले हुए हैं, तो वहीं से आप कर लो, ठीक है. लेक्चर का PDF है, उसमें ही सारे असाइनमेंट डले हुए हैं, तो वहां से कर लो. ऐसा एज सच कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, अलग से कोई कोर्स नहीं है. Bhupati, I will bring something for machines this year, so you can follow that, but that will take some time. But for machines, I will bring some few content. Ashwin's query I will take. I am third year student electrical. I completed signal system, control system, network and mathematics. I will clear signal control, network, mathematics. I will clear gate electrical 2025, but I can't make up with IIT from this exam. So what should be the strategy for the upcoming year? The strategy is you need to start get studying. That's it. This is the strategy, no? You have done signal system, control system, network and mathematics. Then next subject you can pick that is you can pick digital electronics. Now you don't say that sir only one question came from digital electronics, so this is not important. This year one question came, no, next year four questions can come. So I would say you can get started with digital electronics. Anish, yeah, right, that would be correct. Or yeah, digital electronics, no? Yeah, so you can get started with digital electronics, Ashwin. Okay. Achiever, yeah, so what I used to do was I used to finish a chapter. Like I'll not say the specific lecture numbers, but let's say network theory has the first chapter, basic concept of network. So I will study those lectures at once. Okay, then I will stop and then again revise or do some PYQs related to that. But generally we try to finish a chapter, then only like we do practice questions or something. Okay, will you give interview guidance for PSU? Like we can say from where they will ask some questions or something, but mostly we do the interview guidance for MTech and for VLSI domain. Okay. Sir, PSUs, can I do GATE PYQ? Yeah, you can do GATE PYQ and you can do other like BARC PYQs and few easy, the exams which are on the easier side than GATE, those PYQs you can do. नेटवर्क देन सिग्नल कंट्रोल DAE EDC MFT, ठीक है यार, ये ठीक है, बट मैं तो अलग रिकमेंड करूंगा. सिग्नल सिस्टम आप पहले कर रहे हो, सिग्नल सिस्टम बाद में कर लेते. खैर आप कहीं और से पढ़ रहे होंगे, किसी और रिसोर्स से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिस भी रिसोर्स से पढ़ रहे हो, बट देख लेना यार, सिग्नल्स वगैरह की वीडियो देख लेना. मेरे को पता है कि कहीं और कहीं भी से भी पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी इन सब में, डिजिटल एनालॉग में. तो
ठीक है, मतलब मैं किसी रिसोर्स के बारे में नहीं कहना चाहता, जहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये सिग्नल पहले करने का मेरे को मतलब समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्यों लोग सिग्नल पहले करते हैं। बहुत बहुत जगह करवाते हैं सिग्नल पहले यार, बहुत जगह करवाते हैं एनालॉग हाँ। पूरा कंट्रोल, एनालॉग अगर सिग्नल को ढंग से पढ़ेंगे तो एनालॉग और नेटवर्क दोनों के कॉन्सेप्ट उसमें आते हैं, तो सिग्नल पहले क्यों किया जाता है मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन कर लो यार, जहाँ से जो आपकी कोचिंग ने जहाँ से इसमें पढ़ाया वहां से। सिग्नल के पहले आई थिंक मैथ्स तो करना चाहिए यार, सिग्नल, क्योंकि सिग्नल में नहीं, थोड़ा सा सिग्नल्स मैथमेटिक्स। में मोस्टली ये है ना, सिग्नल्स वही पढ़ाते हैं जो नेटवर्क और एनालॉग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते नहीं है, वो हाँ सिग्नल अच्छा। पढ़ाते हैं, और वो रिलेट करते ही नहीं सिग्नल और सिस्टम को। हाँ हर हाँ वो चीज और तो। हर सिस्टम आप एनालॉग कंट्रोल और इसमें एनालॉग कंट्रोल और नेटवर्क में पढ़ते हो, तो सिग्नल हमेशा बाद में किया जाना चाहिए। इसलिए मैं पहले ईएमएफटी ईसी करवाया था, हमने ईएमएफटी पहले करवा दिया, सिग्नल बाद में करवा रहे हैं। तो सिग्नल एक ऐसा सब्जेक्ट है वो सब जो सारे सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकता है एक सब्जेक्ट के अंदर, तो वो बाद में होना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। बट आप पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हो, देखो मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या फ्लो होना चाहिए, बट जिस तरह कराया गया आपको कर लेना वहां से, ठीक है। स्वरूप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, वहाँ पे फाइल्स वाला सेक्शन होगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको पीडीएफ, किसी भी नोट का पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। आपको बस सब्जेक्ट का नाम लिखना है, पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। XYZ, yes, it is definitely manageable, but it depends, right? Like how much time you will be able to get that. It all depends. When is the ideal time? देखो बेस्ट केस सिनारियो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक एटलीस्ट आइडियल टाइम तो नवंबर मिड पे हो जाना चाहिए, बट यू कैन टेक इट टिल दिसंबर मिड, बिफोर दिसंबर मिड योर सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। रोनी और सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबस कंप्लीशन? द सिलेबस कंप्लीशन मींस यू शुड हैव द टेम्परामेंट ऑफ अटेम्प्टिंग द फुल लेंथ टेस्ट। If you feel like that, sir, I will attempt the full length test, I have completed the syllabus, but I am getting 25 marks. So, do you really think you have completed the syllabus? No. So, you should have the temperament of attempting a full length test. That means your syllabus is completed. Yeah. One more thing I want to add, like students understand syllabus completion basically means I have just watched all the lectures. That is not what you mean by syllabus completion. Syllabus completion means you completed network theory, you did all the PYQs of EECIN, and then again you move on to other subjects and you did all the PYQs. Then only your syllabus is completed. And it's okay if you don't attempt the subject-wise tests, that is fine. But at least you should attempt the PYQs diligently. And whatever the educator has given some DPPs or something, right? Those you should be able to finish. And it's not like just you see the PYQ and solve it and that's it. No, I know like how you guys solve the PYQ. You guys don't solve the PYQ in the manner that like we tell you guys to solve. So that also needs to be better, made IQs better. may, like, what is the best way of solving the IQs? Just think that there are no solution available. That's it. There should be no solution available. If there is no solution available, then you will solve the PYQ in a good manner. Otherwise, you will see the question, not able to solve, just see the answer. That's it. And you are not learning anything. So solve the PYQs in a manner that there are no solutions available. And once you are done with the, like, let's just say in a chapter there are 8 topics. Okay, in a subject there are 8 chapters. So if you are done with 3 to 4 chapters, after that you get into the PYQs. Okay, so PYQs are very underrated and sold in a, like, in a very Worse wrong manner. manner, So very worse manner. Like students don't know how to solve the PYQ. That is a problem. I prepared rigorously, but I never could have attempted. I could have never completed my own subject PYQ, my own EC. I attempted electrical and IM PYQ as well, but we couldn't complete it like in a good manner. Everything was not completed, Yeah. right? But that I is not also possible. few such chapters I also missed, so I was not. But nowadays students say that I have completed all the PYQs. That please give me more question resource. Please give me more questions. बाकी more questions resource की बात है तो like there are enough questions available in our Test series, test series. there are test series. Yeah, you can obviously purchase that. 48, 47. EC, you are saying EC, right? Equalizer. If you're saying EC, then it's possible, but it depends. Like if you are from a category, then it's definitely possible. If you are general, then like it is a edge case, right? Like you have to go till then, like last counseling, something like that, last round of counseling. Like suggestion would be Tetali, suggestion would be prepare for gate. That is the only suggestion. Okay. करण का है कि सर गेट इसी सोल्व क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में यहाँ बोल दो यार करण, आप वो क्वेश्चन ठीक है यहाँ बता देंगे, आप बोल दो एक बार, ठीक है। Gidala, already we have uploaded a video for BARC. Just search BARC preparation prep region. Just search that. So my digital is I want to prepare for IC center के interview I should have डिजिटल वीक है तो यार देखो, पर कर लो कहीं से, वरना हमारा कोर्स है वहां से कर सकते हो।
पूरा फ्री में यूट्यूब पे तो नहीं आ सकता वो कोर्स। बाकी डिजिटल के लिए और क्या कर सकते हो, डिजिटल के लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई एनपीटीईएल का कोर्स भी इतना अच्छा मैं सजेस्ट कर नहीं सकता सैडली। अगर होता तो मैं बोल देता। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिजिटल आईसी डिजाइन के लिए यू कैन रेफर टू जानकी रमन सर कोर्स, बट नॉट फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक आईआईटी केजीपी की एक प्लेलिस्ट है, वो ठीक है, वो फॉलो कर सकते हो अगर एनपीटीईएल से पढ़ना है तो। बाकी मैंने करवा दिया है मेरे कोर्स में, तो वो आप पे है। ईएमआई के बारे में पूछ रहा है। ईएमआई आई थिंक इट इज लाइक in the first installment you have to pay like 7.5k 7,500 like 7,500, and after 6 months again you have to pay another 7,500. That is the structure of the EMI. That's it. डायोड क्वीन क्या होता है, आपको क्या लगता है? बेसिक लेवल एडवांस लेवल क्या होता है? कुछ नहीं होता। बेसिक एडवांस लेवल, देयर इज नथिंग कॉल्ड बेसिक लेवल एडवांस लेवल। एंड हाउ वुड आई टीच डायरेक्टली ऑन एडवांस लेवल? लुक, देयर इज नो एजुकेटर इन दिस फील्ड who knows advanced level of any subject, okay? No educator is there in this field, so no लोग one लोग has taught on पीएचडी कर रहे advanced हैं, level. लोग पीएचडी कर रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? एडवांस लेवल पे कोई सब्जेक्ट चला गया तो फिर समझ ही नहीं आएगा। इंडिया में मेरी, आई डोंट थिंक इन इंडिया देयर आर मोर देन 50 पीपल हु नोज द एडवांस लेवल ऑफ analog electronics, okay? Not more than 50 people are there in India. So how do you expect me to teach on advanced level? And why would you ask? You can just go and see the videos, no? Your name is Diode Queen, but once you see the diode circuit part, you can remove that name. You will be removing that name, okay? So डायोड, you can see आफ्टर what's डायोड wrong. समथिंग एल्स विल हैपन आफ्टर कुछ और हो जाएगा। Diode is not that diode which we usually study. Diode is something else. You can see the videos on your own, okay? ईडब्ल्यूएस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ईडब्ल्यूएस में पॉसिबिलिटी। इंडियन रील्स लाइक you just have to study, like there is not how many hours to study, what to do, just start studying. Okay, start studying. If you like, if these kind of thoughts are coming, right, these are wrong questions to ask. These are not the right questions. Well done the like now I have like bring the Verilog. You are saying system Verilog. Now when I will bring system Verilog, you will say UVM. Okay, then I will bring UVM, you will say something else. कुछ ना कुछ तो बोलोगे आप Industry, फिर। like in the industry, neither whatever the learn you hear, Verilog system, Verilog, nothing is going to be used in your industry, okay? Industry is something else, ठीक है? It's a Verilog is a language. If you like, if you first people learn Verilog, then they go to system Verilog. अगर now today you will say sir I will learn analog electronics first, I will not learn network, then क्या होगा? कुछ नहीं होगा, right? Yeah, diode queen, yeah, prerequisites are required. That is network analysis. The prerequisites of analog electronics is network analysis. And if you are studying analog electronics from prep fusion, then I would say first complete at least the transient part of network analysis from prep fusion. Okay, at least the transient part should be completed. Transient part is very much required. हाँ यार, 44 आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, एनआईटी मिल सकता है, ये बता दिया यार अभी। बार बार मत आप एक ही से इंक्वायरी करो, वरना ब्लॉक हो इक्वलाइजर, जाओ। आपको क्या लगता है लाइक आई एम ए गॉड लाइक यू आर सेइंग आईआईटी बीओयू पॉसिबल, लाइक इतना एग्जैक्ट मैं आपको कैसे बोल दूं कि मिल जाएगा नहीं मिलेगा? मैं कैसे अभी से कैसे बोल दूं मैं आपको? और ये बताया ना, ये सेशन 2026 के लिए, 2025 वालों के अलग से सेशन ले लेंगे। और अभी आप थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन। इस वीकेंड तक आपको आराम से मैं मार्क्स वर्सेस रैंक बता सकता हूँ, ठीक है? आराम से मैं बता दूंगा। अब आप ये, अब यहाँ पे किसी ने पूछे 40 क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन ईसी, अब मैं कैसे बताऊं कि कौन से आपने 1 मार्क के किए, 2 मार्क के किए? मैं कैसे बता सकता हूँ अभी? आप इस वीकेंड तक सभी वेट करो। इस वीकेंड के बाद मैं आराम से मार्क्स वर्सेस रैंक बढ़िया से बता दूंगा, और उससे 2 से 3% ऊपर नीचे होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आप लास्ट ईयर का नाम से जाके चेक कर लो, मार्क्स वर्सेस रैंक एकदम फिट बैठा था, एकदम सही हुआ था। तो आप इस वीकेंड तक का वेट करो, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस इस वीकेंड का वेट करो। और ये क्वायरीज रिपीट मत करो भाई, मतलब एक साथ अगर कोई मिस हो गई है तो लिख लो, ठीक है? और बेस्ड वर्मन आपको सर लिखना है तो SIR स्पेलिंग होती है, SAR नहीं होती। तो यहाँ पे आप ना कूल बनने का ट्राई करें, और ये मत करना कि टाइपो हो गया। तो सर नहीं लिखना, तो आप नाम लिख दो। SAAR लिखने की जरूरत नहीं है, जैनजी वाले कूल बनने की जरूरत नहीं है इस सेशन में, भाई ठीक है? इससे कूल कूल बनते नहीं हो, मतलब ऐसा लग नहीं रहा आप कूल, ठीक है? इससे कुछ और ही लग रहे हो। सर वाली फीलिंग नहीं आती है तो मत लिखो सर।
आईसीएस के लिए यार ठीक है, मतलब एनालॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहले आईसीएस के लिए. यू कैन स्टडी लाइक digital as well, but analog would be more important for ICS, especially for interview and written test. So there was a question on channel capacity graph. Can you show the graph of it? डाल दिया यार, ये इक्वलाइजर ही डाल दिया. सोल्व किया हुआ है उसमें, बता दिया. Priya, I think you have to like study the subjects properly. Like when you have completed a subject, try to solve the POQs. If you are not able to solve the POQs, then there is something wrong, either on your learning or from the other end. Okay, then you have to change, like study from some other educator. Yeah, EDC course, analog course worth for gate on NPTEL. Yeah, worth. You can prepare. You can prepare from NPTEL. Yeah, big hero for now we don't have any scholarship test, but if you get a good rank in gate 2025, then of course we can arrange something for you guys. Whoever will get a good rank in gate 2025, we will arrange something. Abhi, based on Abhi, this now is the best time to prepare for gate. Okay. From Perfusion, we don't have any preparation strategy for ESE specifically, but you prepare the subjects for gate, and whatever are the remaining subjects, those you can prepare separately. Just that is the preparation strategy. What else? Just for ESE, for the prelims, you have to take care that in prelims they really ask easy questions, theoretical questions. So you have to study the theoretical topics. That is the extra thing for ESE. Yeah, Pranati, you can start the preparation now. Hi, engineer, you can start preparation. You can start to prepare for ESE, WES in third year. You can start. But when you will appear for the exam, you should be at the final year. So I'm in tier 3 college. Should I go for MTech? My preference would be to go for MTech. करण, वो एप्टीट्यूड वाला सवाल वो सही से मिला नहीं है पूरा. जब वो मिलेगा तब उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना. एप्टीट्यूड वाला वो, उसमें रॉन्ग ऑप्शन बताना था, हमने करेक्ट लिखे हैं. अब कौन कौन से ऑप्शन थे वो पता ही नहीं यार अभी. ठीक है, तो वो मिलेगा तो कर लेंगे. Hari, for now we will not be able to comment on the marks. This is not no sir. EDC का अच्छा कोर्स पता है तुझे? EDC का कुछ अच्छा कोर्स? इंटरव्यू प्रिपरेशन. कौन सा इंटरव्यू प्रिपरेशन? कौन सा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ईडीसी का अच्छा कोर्स? मतलब कौन से इंटरव्यू के लिए? कौन से इंटरव्यू में ईडीसी पूछते हैं यार? मेरे को तो पता नहीं. वैसे ईडीसी में एक, अगर आपको पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है तो आईआईसी बैंगलोर के प्रोफेसर हैं, उनका एक कोर्स है, और एक आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर है, उनका कोर्स है. तो सीधा सा आप लिख दो ईडीसी आईआईटी हैदराबाद, ईडीसी आईआईसी बैंगलोर, तो वहां से आपको कोर्स मिल जाएगा. बट मेरे ख्याल से इंटरव्यू में, कोई इंटरव्यू में ईडीसी को बढ़िया से पूछा नहीं जाता, इंडेक्स पूछा नहीं जाता. सरफेस लेवल पे मोस्ट पूछते हैं, वो भी सर्किट एनालिसिस वाला मोस्ट पूछते हैं, कोई डिवाइस लेवल पे जाता नहीं है ईडीसी के. बाकी आपको पढ़ना है ईडीसी तो ये दो कोर्स मैंने बता दिया, आप वहां से पढ़ सकते हो. Pranati, like there is a video on our channel, like regarding the orientation session of gate 2026 and 2027. So you can watch that video. There complete information is there. What are the sequence of subjects? What are who is covering what subject? Who are the teachers? How is the course curriculum? Everything is covered in that video. I will just pin that video right now in our comments. इक्वलाइजर देखो, पहली बात तो आप एक क्वेरी को बार बार रिपीट मत करो, ठीक है. दिस इज द लास्ट टाइम यू आर रिपीटिंग द क्वेरी. सेकंड थिंग, वो कैपेसिटी और बैंडविड्थ का सीधी सी बात ये है कि बैंडविड्थ बढ़ेगी तो पहले कैपेसिटी रिग्रेसली बढ़ेगी, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी. अब सी वर्सेस बी कर दिया था, बी वर्सेस सी कर दिया था, ये मेरे को कैसे बताऊंगा? ठीक है, तो बात यही है कि पहले बढ़ेगा, अगर बैंडविड्थ बढ़ती है तो कैपेसिटी बढ़ती है, बाद में कैपेसिटी सैचुरेट हो जाती है, एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाती है कैपेसिटी को. ठीक है, 1.44 इंटू सिग्नल एसएनआर, ये फॉर्मूला होता है जब बैंडविड्थ इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है. तो बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखो, उसके बाद सैचुरेट कर जाएगी. अब सी वर्सेस बी कर दिया था, बी वर्सेस सी कर दिया था, मैंने आंसर बताया, कॉन्सेप्ट वही लगेगा. अब जो कर्व आएगा उस हिसाब से मैं बता दूंगा. अगर आपके दिमाग में सेम कॉन्सेप्ट आया था एग्जाम के दौरान तो ठीक है, वरना सवाल गलत हुआ है. बात इतनी सी है, ठीक है. अब आप वापस रिपीट मत कीजिएगा. मैं वीडियो बनाते वक्त तो ये सारी चीजें बोला हूँ कि ये ऐसा कर्व क्यों आया है, सब कुछ बोला हूँ, ठीक है. हाँ, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. IIT Kharagpur, MTech, Power Electronics, how much minimum score required? As of now, cannot tell.
IIT खड़गपुर स्कोर ही इज आस्किंग, ओके ओके, स्कोर IIT खड़गपुर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। IIT खड़गपुर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कम में मिल जाता है, मतलब मेरे ख्याल से 500 550 600 के आसपास मिल जाता है। 600 में मिल जाएगा, 600 में मिल जाएगा, हाँ। मिल जाएगा। 600 you will get IIT Kharagpur in 600। स्कॉलरशिप टेस्ट यार यूजी करवा दिया था ना पहले, दिसंबर में करवाया था आपने, कब करवाया था, नवंबर में करवाया था, नवंबर में करवाता है। नवंबर में करवा दिया था ना। इन दिसंबर वी हैव ऑलरेडी conducted the scholarship test at that Like time if for the dropper students who will get a like occasion rank in gate, for those guys we will arrange something. Okay, yeah, rest for dropper assured we students will. those who have already attempted gate, we will arrange something. Otherwise, like who wanted to start a fresh, you can start now. Okay, gate इसी में पिक्चर मार्क्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से हूँ, what should I do? It's good. What you can do, you can cover analog electronics in a good manner, or you can cover digital electronics in a good manner for the interview purpose. I'm saying if you are getting 55, that should be good. But in this video, we are not talking about gate 125 students. We will talk about them later on. This is for gate 126 students. Yeah, दीपज्योति आयन का कोर्स कोई नहीं आएगा अलग से। There will not be any separate course for iron. Guys, like we'll prefer if you ask queries related to gate 2026. For 2025, we will like have another session. Okay. Only for gate 2026 in the thumbnail as well. It is written for 2026. If you want to ask query, you can ask. I did self-study for GATE EC exam from YouTube playlist, getting 35, 36 marks. Should I study the subject again from any course for GATE 126 EC? You can study if you feel like that you are not that confident in the subject, then you can study. If you feel like that I am confident enough, then why should you study the subjects again? Okay, you just need to practice. So just do the practice and proceed to the next subject. Okay, yeah. Divakar, if you have got a placement like Okash company, then you take that placement and prepare along with your job. UG for now, no. For now, for placement courses, we will not have any scholarship test for now. नहीं अचीवर एक बार आपने टाइप किया कि नहीं किया? मेरे ख्याल से एक ही प्लेलिस्ट है आईआईसी बैंगलोर से ईडीसी के लिए, और आईआईटी हैदराबाद से भी एक ही प्लेलिस्ट है ईडीसी के लिए। आप एक बार टाइप करके देखो, एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, बाय द वैसे आईआईसी वाले प्रोफेसर सर का नाम विप्रोदित है, और आईआईटी हैदराबाद वाले प्रोफेसर का नाम मैं भूल गया थोड़ा। आईआईटी हैदराबाद ईडीसी, Abhishek, you can take a drop because if you join any other college, then your like schedule will be hectic. 1 year drop is totally acceptable. There is no problem with 1 year drop. हाँ, नरेश इमानी सर फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, Thank you. तो उनकी Thank you, Shailendra. Whoever is watching this session live, like you guys can like the session, like so that it can reach more people. Okay. Pranathi, your query is not clear actually. Okay. सर्वे के टाइम पर इतनी now we should give more time to syllabus completion than practice. When you reach nearer to your examination, you should give more time to question practice. रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा यार, वेडनेसडे को आ जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वेडनेसडे को आ जाना चाहिए, या फिर कल भी आ सकता है। कल परसों रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा। उसके बाद मैं आंसर की भी बना दूंगा, किसमें क्या आंसर होगा पूरा परफेक्ट। ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए पूरी आंसर की हम बना देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स शीट आने दो, उसके बाद आंसर की 1 वीक बाद आती है, और उसके बाद जो फाइनल आंसर की आती है वो रिजल्ट से कुछ घंटे पहले आती है। ठीक है, तो 2 दिन बाद वो आ जाएगा, रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा। उसके बाद रैंक प्रेडिक्टर लाइव हो जाएंगे। 2-3 दिन में रैंक प्रेडिक्टर सैचुरेट कर जाएगा। उसके बाद मैं पूरा एनालिसिस करके मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस एक्सपेक्टेड स्कोर क्या कुछ मिलेगा सब बता दूंगा। थोड़ा धैर्य रखो शनिवार तक। ओके, इस वीकेंड तक धैर्य रखो। संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो ले ही आऊंगा कि किसको क्या मिलना है। उसके बाद आपको क्लियर आइडिया होगा कि मेरे को 2026 के लिए जाना है, पीएसयू के लिए प्रिपेयर करना है, बीआरसी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर मेरे को गेट 2025 अटेम्प्ट से ही कुछ अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीकेंड तक का वेट करना है आपको।
हाँ ये आर्यन, ये काफी लोग बोल रहे हैं यार, ये फॉरवर्ड बायस वाला एमसीक्यू था, वो क्या फुल वेव रेक्टिफायर वाला एमसीक्यू था, सही में था क्या एमसीक्यू? कोई और भी कंफर्म करो, क्योंकि दो लोगों ने बोला ये मेरे को कि वो लोग में वो फुल वेव रेक्टिफायर वाला एमसीक्यू आया था। अगर एमसीक्यू था तो ठीक है, मतलब कोई और कंफर्म कर दो। हार्दिक, कितना टाइम देना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन के लिए? जितना दे पाओ बोल उतना। दिया, बोल दिया, बोल दिया। देख ठीक है ये यार। बोल रहे हैं एमएस का था, अभिषेक हाँ, बोल कुछ रहे हैं लोग एमएस। एमएसक्यू बोल रहे हैं, कोई कुछ एमसीक्यू बोल रहे हैं, अक्षत ने भी एमसीक्यू बोला था मेरे को। क्या अक्षा भी बताऊं? बोल रहे हैं एमएस क्यू था, एमएस क्यू था बोल रहा है अक्षा भी। ठीक है यार, हाँ एमएस पता क्यू, नहीं। सब सब एमएस क्यू बोल रहे ठीक हैं, है एमएस क्यू बोल रहे ठीक है। फिर यार मैसअप हो गया आपका। अरे, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ठीक है, दो लोगों की गड़बड़ हुई लेकिन। हाँ, दो हैं। ऑप्शन अभिषेक टिक हो नहीं। रही है, इसका मतलब एमएसक्यू है, अगर टिक हो रहे हैं तो। हाँ अगर नहीं टिक तो नहीं होता ही नहीं है, हाँ। सर इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी? No, 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 no. I also recommend students, like if you are studying power systems, right? You start with the power system 2. Power system 1 uh, is important, but the weightage is on the higher side for the power system 2, and that is more mathematical. So GATE also likes to ask mathematical questions. So mostly questions come from power system 2 fault stability. नहीं, ठीक है यार। इक्वलाइजर, आपको कहीं और बढ़िया क्वारी मिलती है तो वहां जाओ आप, ठीक है? ये आपका लास्ट मैसेज था इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? चलो, नहीं, आपको अगर कोई और इतने अच्छे से आंसर करता है तो बढ़िया से बिल्कुल बता रहा है कोई ना कोई और, तो वहां चले जाओ आप, ठीक है ना? चलो, बढ़िया। हम्म, कोई एमसीक्यू so, बता रहा है, कोई एमएसक्यू बता रहा है। ठीक है, हर वो पेपर आए तब देख लेंगे। so I'm currently unemployed. Start studying. That is just the opinion. Like start studying. You can prepare for 2026. If you look for the job, then it would be very difficult, right? If you look just for the job, it will be very difficult. So you can prepare for gate along with that. If you want to look for the job as well, you can look for the job. But since you are 2024 pass out, you would have like for last 6 months you would have been already looking for the job only, no? So you would know. Mm. Microelectronics VLSI, but we will talk about that later on. So, sir, 1 month ago there are some videos of 20, but in there are another videos. So no, I am not able to understand what you are saying. Sir, नो, हिंदी प्लस इंग्लिश का मतलब क्या होता है? हिंदी ही होता है, ठीक है? इंग्लिश नहीं होता, वो केवल बोलने के लिए बोलते हैं। इंग्लिश कोर्स है, इंग्लिश कोर्स का क्या मतलब है? हिंदी कोर्स है वो। तो वही करें ना हम लोग, ठीक है? हम वो लोग इंग्लिश कोर्स ही लिखते बता हैं। रहे हाँ, वो लिखते इंग्लिश पे है, बस वहाँ पे टाइप करते हैं इंग्लिश पे। हैं। तो ये इंग्लिश कोर्स ही होगा, और बाकी आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। मेरे ख्याल से लगता नहीं लैंग्वेज बैरियर कहीं बीच में आता है, ठीक है? अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो, अंग्रेजी में पढ़ रहे हो। बाकी मास्टर्स करोगे बाद में तो सभी इंग्लिश कोर्स में पढ़ना है, सारे कोर्स इंग्लिश में पढ़ने हैं, ठीक है? तो ऐसा है कि हिंदी से बड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इंग्लिश से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। वो तब होगा जब आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। मैंने खुद कई कोर्सेज पढ़े हैं। अब रजावी सर से आप पढ़ लो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार रजावी सर को थोड़ी बोलोगे सर हिंदी में पढ़ा दो, इंग्लिश में हमें समझ नहीं आ रहा। आता है सब समझ में। बात वही है ना कि कंसंट्रेशन की बात है। नहीं, मतलब वो आदत हो जाती है ना, जब किसी के बंदे को कुछ चीज में आदत हो जाती है तो ही डजंट वांट टू शिफ्ट टू समथिंग न्यू। हम्म, वो है बस, जब तक वो कंपलसरी ना हो जाए, क्योंकि मास्टर्स में तो इट विल बी कंपलसरी, लाइक यू हैव टू स्टडी इन इंग्लिश ओनली। नहीं, हम लोग गेम वेम नहीं खेलते यार, दोनों ही नहीं खेलते। पावर सिस्टम 1 वाला क्या था यार? क्या चीज पावर था ये? सिस्टम 1, मतलब बोल दिया मैंने, बोल दिया। 70 आ रहे हैं, बढ़िया यार। इंजीनियरिंग 2.0 काफी बढ़िया है। EC 45 मार्क्स अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी वुड बी देयर। यू हैव डन वेल। अच्छा, PSA 1 से आए थे। हाँ, इस बार आया था। PSA 1 से जनरली नहीं करते, बट इस बार आया था थोड़ा सा। वो थ्योरेटिकल, दे डिड आस्क फ्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है? तो VLSI देखो, IITM, there has been only one query from your side, that is high. So I don't think I should give a reply to the message that says hi. So if you want to ask any query, you can ask, but I don't think there is any other message from your side rather than hi. so
like engineer 2.0, one thing I will say. So what we learned from this gate 2025, right? Gate can ask from anywhere, okay, because the syllabus is there. Sometimes they ask from out of syllabus as well, because previously what has happened, they have removed the microprocessor chapter, still they have asked question from microprocessor. So that is what we recommend students as well. Don't like skip any topics, but they ask like what are the important topics. That's why we have to tell them like this is more important, that is more important. But generally the recommendation will be don't try to not skip any topic. Yeah, Jad, thank you for that. Thank you for that thing. Yeah, a lot of people think they know network, then after that they realize they don't know network. It happens. Yeah, it's good. Yeah. Madhu, lectures will be recorded. Okay, lectures will be Recorded recorded, but lectures. we will have few doubts, live doubt solving classes if required. Also, we have bi-weekly 1:1 meet session where we guide students regarding like the preparation and all. Yeah, look, big hero 6. We cannot all the time we can arrange like those scholarship test for placements. I don't think we arranged any scholarship test for placement course, no. But like, why do No, we no, there was a right just that analog last year था वो इस साल लास्ट नहीं था। ईयर, हाँ वही लास्ट ईयर की बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर। हाँ देखो, अब गेट के कोर्स में क्या होता है कि हम इतना सब स्कॉलरशिप वगैरह लेके आते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट करा देते हैं, और फिर भी इतना कम है, 800 आवर्स प्लस का कोर्स है और इतने कम प्राइस में है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट के पास इतना अच्छा आरओआई नहीं है उसका कोर्स का, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं है ना कि बच्चे का गेट निकलेगा ही नहीं निकलेगा, कितनी मेहनत कर ले, तो इसमें बहुत ज्यादा उसको दिक्कत है, और निकल भी गया तो उसके बाद उसको मास्टर्स करने जाना है, वहां पे भी उसको मनी इन्वेस्ट करनी है। तो एक कोर्स का प्राइस उसके आरओआई पे डिपेंड करता है। जेई के कोर्स इतने क्यों होते हैं महंगे? क्योंकि वहां पे स्टूडेंट नहीं पे कर रहा, उनके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, और वो उनकी इनिशियल पढ़ाई के लिए पे कर सकते हैं। गेट में मोस्टली स्टूडेंट खुद पैसे जुगाड़ के पे करता है, इसलिए एज ए टीचर मेरे को पता है कि वो प्राइस कम रखना है। अब बात आती है प्लेसमेंट कोर्सेज की, तो प्लेसमेंट कोर्सेज में आप ऑलरेडी टायर 1 या टायर 2 कॉलेज में हो ना, तभी आप प्लेसमेंट कोर्स के लिए बात कर रहे हो, और उसका आरओआई बढ़िया है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा, क्योंकि मोस्टली चांस ये होता है कि जो ढंग से प्रिपेयर करेगा उसकी नौकरी लगी जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और नौकरी का आपको पता ही है पैकेज वगैरह कितना बड़ा होता है, तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करिए, कितना आपको आउटकम मिल रहा है उस पर सब चीजें डिपेंड करती है। और रही बात प्लेसमेंट कोर्सेज की, तो आप सोचो कि कितने वीएलएसआई इंडस्ट्री, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वीएलएसआई वाले, इनका भाई क्या प्राइस है कोर्स का, और यहाँ पे क्या इट्स प्राइस लाइक है, 10x, आप ये 10x 10x होता है उनका 10x प्राइस, प्राइस है। 10x। ठीक है। आवर्स ऑफ कंटेंट हमारे ज्यादा है। सेकेंडली बस ये है कि वो कोई स्पेसिफिकली टूल सिखा देते हैं, और क्वालिटी ऑफ कंटेंट जितना हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं उतना छोड़ ही दो, नजदीक भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो हम लोग का कोर्स का प्राइस है 3000 एनालॉग का कोर्स, और रफली अराउंड डिजिटल का कोर्स भी इतना ही है, या इससे कम प्राइस का है। तो आई डोंट थिंक दैट इज टू मच। तो इसके लिए हम लोग प्लेसमेंट कोर्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप लेके नहीं आते, और गेट वालों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि बात वही है, क्योंकि गेट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, उसको एक साल प्रिपेयर करना पड़ता है, और फिर 3 घंटे में जाके उसका फ्यूचर डिसाइड होता है वहां पे। तो इसलिए वहां पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है, ताकि स्टूडेंट एटलीस्ट बढ़िया से तैयारी कर पाए कि उसने इतना भी पैसा नहीं लगा दिया है, इसलिए गेट के प्राइसेस लो होते हैं। वरना ये 800 प्लस आवर्स का कोर्स आराम से 30,000 35,000 का तो आराम से बनता है। नहीं नहीं, और दूसरा बात भी है ना, लाइक इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ऐसा है, सब कंपटीशन लोग भी लेके ज्यादा आ है गए, भाई। तो इसलिए। और नहीं, अभी बात जेई में तूने वैसे बोल दिया जेई का कोर्स का वैसे ज्यादा है, लेकिन मैंने जो रिसेंटली व्हाट आई हैव सीन इज रिसेंटली लाइक ऑनलाइन कोर्स जेई कोर्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, लाइक दे आर ऑन द चीपर एंड ओनली बिकॉज द मतलब फिर भी कंपटीशन ये हैज। एलन वगैरह तो कम कर ही नहीं रहे यार, एलन Alan, वगैरह का तो those are other guys, but generally, like if you see most industries, like you will see, like it's not that high because the competition has gone up so much. अनिरुद्ध, वो सब्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन मैं देखूंगा जब आएगा तो, ठीक है। लाइव क्लासेस नहीं करेंगे यार अरेंज, लाइव क्लासेस के लिए और दूसरे इंस्टीट्यूट से आप पढ़ सकते हो। Preeti Mishra, just search BARC preparation strategy perfusion. Just search that, you will get that video. नहीं, बिग हीरो आपने इरिटेट नहीं किया यार, इरिटेट किया ही नहीं। आपकी क्वेरी ठीक थी, मतलब आपको पूछना चाहिए था, इरिटेट नहीं किया। इरिटेट वो लोग करते हैं जो कह रहे हैं कोर्स भेज रहे हो, वो भेज रहे हो, इरिटेट नहीं किया। इरिटेट करते तो आपको मैं हटा ही देता ना। हाउ इज आईएससी इंस्ट्रूमेंटेशन? इट इज गुड, गुड। इफ आई डोंट गेट ओके सर, मैथ्स एप्टी सीएस डिजिटल नेटवर्क कंप्लीट किया था, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाए एग्जाम में, क्या करूं? तो सही करो से यार, कंप्लीट सही। नहीं किया ना आपने, सही से कंप्लीट अपने गेट पे वैसे सॉल्व किए सही से कॉमन ब्रांचेस के। देखो, कंट्रोल सिस्टम्स के नहीं हुए फिर भी ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा टफ आ गया, लेकिन मेरे ख्याल से यार हाँ, डिजिटल नेटवर्क होने चाहिए थे इस साल। मैथ्स भी होना नहीं, चाहिए था, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए नेटवर्क का वो एसी से पूछ लेना, लेकिन एसी भी उतना भी था। तो ऐसा लेकिन कुछ नहीं था एसी कि वो हाँ। था ही नहीं कोई एसी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था एसी का, वो बेसिक्स ऑफ ना ना, नेटवर्क था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हाँ वो पहला वाला था, लेकिन
रेजोनेंस वाला थोड़ा सा उनको लग सकता है, लेकिन वो पढ़ते हैं यार, वो तो पढ़ते हैं यार हाँ, वो मतलब। पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं, वो फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ते हो इतना, मतलब कि ठीक है मीटर 5। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका एसी से सवाल आया ईसी में, तो वो रेजोनेंस कंडीशन पे होगा 100%। आरएलसी सर्किट दिखा दो तो वो रेजोनेंस कंडीशन पे निकलता है, रेजोनेंस कंडीशन पे ही था। तो नेटवर्क में बोलूंगा कि इस बार एसी पूछा, लेकिन जिसने एकदम से ऐसे सोच लिया कि मैं एसी का सवाल करूंगा ही नहीं, उसने ही नहीं किया वो सवाल। देखो वो बात है। तो अब मैं बुरा लगूंगा बोलते हुए यार, लेकिन अब ये जो रियलिटी है वो है। सर डिजिटल का क्वेश्चन एमटी होगा कि नहीं होगा, वो पेपर आएगा ना जब मैं देख लूंगा। बाकी एमटी होगा नहीं वो। मैं चैलेंज करूंगा उसको, अगर सवाल मैं लैंग्वेज पढ़ गई मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन आईआईटीज वाले मानेंगे नहीं, एमटी करेंगे नहीं उसको। आंसर उसका सब्ट्रैक्टर दिया जाएगा, आंसर सब्ट्रैक्टर ही दिया जाएगा। बट वो एमटीए होना चाहिए, अगर लैंग्वेज उसकी सही नहीं है, जो कि मैंने देखी नहीं है। आएगी लैंग्वेज तो मैं देख लूंगा, बाकी उसको होना चाहिए, बट आईआईटीज वाले मानेंगे नहीं उसको। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। Patel, then you are not preparing correctly, right? If you have given the gate 4 times and you are not able to qualify, that means either the resource that you have followed is not correct, or the preparation, right, is not correct. Like there is a video on our channel, preparation strategy for gate 2026. Go and watch that. और एज का क्राइटेरिया नहीं है मेरे ख्याल से इसरो में इतना नहीं ज्यादा, नहीं, आईएसआरओ में। अच्छा अच्छा, ISRO आई डोंट नो। आईएसआरओ में ये नहीं मेंशन नहीं, है ना, एज का क्राइटेरिया होता है होता है। यार। आई थिंक एजेंट कुछ तो हाँ, होता है, तो मतलब इतना कोई ज्यादा भी मैं बोल रहा हूँ, वो है ना 31 एज है मेरे ख्याल से आईएसआरओ के लिए। जनरल स्टूडेंट 31। तो अभी तो आपके पास टाइम है, आप 25 की हो, आपके पास टाइम है तो। और कोई भी पीएसयू में मिनिमम मतलब जनरल के लिए 27 होता है, तो आपके पास फिर भी 2 साल बचते हैं, और 2 साल इज मोर देन इनफ। तो एज का आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो जॉब भी है, लाइक यू कैन टोटली गिव। मीट नगर, यस इट इज टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। Sir, which is good to start in EC core subject? You can start with EMFT. We have covered EMFT. You can start with that. कोर्स सब्जेक्ट एमएफटी, taking drop for EC worth. If you prepare well, then it is worth it. I'm expecting 53 plus. यार संदीप, कोई लोग कह रहे हैं कि यार वो उसमें वो वोल्ट में पूछा था, मिली वोल्ट में नहीं पूछा था। कई लोग बोल रहे हैं ऐसा। अब पता नहीं क्या सीन है। कई लोग बोल रहे हैं मिनी वोल्ट में पूछा था, कोई लोग बोल रहे हैं कि वोल्ट में पूछा था। आपको क्या याद आ रहा है? ये भी 3-4 लोगों से मैंने सुन लिया कि वोल्ट में पूछा था सर। Yeah, but it is fine. We understand, like you will not be able to get to time, but still, like if you have attempted 4 times that, then something is wrong, right? Like it will not be just your job. Something is wrong. Preparation strategy is wrong. रोकी, कहाँ से पढ़ा आपने ईएमएफटी? आपने पढ़ा है क्या ईएमएफटी यहाँ से प्रेप फ्यूजन से? और कौन सी ब्रांच से हो आप, ये भी बता दो। कहाँ से पढ़ा है आपने ईएमएफटी? सर डीआरडीओ साइंटिस्ट के लिए सेपरेट एग्जाम लेगा, लेना चाहिए यार, लेना चाहिए। वरना लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन है नहीं, लेना चाहिए लेकिन। जनरल कैटेगरी लास्ट टाइम इट वाज 27 आई गेस, बट प्रिपेयरिंग विद जॉब नॉट एबल टू फोकस इन बोथ, बट कांट लीव द जॉब। तो इसका तो वी कैन नॉट से नहीं, मैंने एनीथिंग ऑन बोला दैट ना वन। उनको कि लाइक आप प्रिपेयर थोड़ा सा गलत से कर रहे हो। आपको मतलब स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। अगर 4 साल दिए हो फिर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा आपको। सही करने के बाद भी मिली वोल्ट में पूछा था भाई, मिली वोल्ट में पूछा था, फिर 0.25 गलत हो गया फिर। देखो, रैंक आई कैन नॉट कमेंट फॉर रैंक, आई कैन कमेंट फॉर स्कोर। मिनिमम इट शुड बी 700 750 समथिंग लाइक दैट, फॉर जनरल। मतलब 700 आ गया तो सेफ हो एकदम आराम से। 600 आ गया तो भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन तो भी 700 आ गया पॉसिबिलिटी। तो आराम से मिल जाएगा। तो रोकी ईएमएफटी डाल रखा है यूट्यूब पे, एक बार देखो, पढ़ के देखो उसको। ठीक है, यूट्यूब पे डाला हुआ है प्रेप फ्यूजन से, एक बार पढ़ के देखो उसको। ठीक है, जो टॉपिक आपको टफ लगा होगा ईएमएफटी में, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो टॉपिक टफ लगा है केवल एक बार उसकी वीडियो देखो, फिर देखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर और अदर रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक बार यहाँ से पढ़ के देखो। Patel, specifically, like we don't provide guidance. We provide course. In that, guidance is included, but don't buy our course just for the guidance. For guidance, we are on YouTube. Okay, we are on YouTube. You watched Yeah. your roadmap.
Yeah, you can continue with the engineering mathematics, or you can start with our video, like get 2026 roadmap. Watch that video and like proceed with the roadmap. अंडर 100 EC में आपको वर्स्ट केस 65 मार्क्स, वर्स्ट केस 65 मार्क्स आई एम सेइंग, अंडर 100 वर्स्ट केस. Okay, I don't think there are any doubts from the course itself. ठीक है, बाकी इनका मेरे सेशन लेंगे 2025 वालों का, इनको काफ़ी डाउट है, तो 2025 वालों का सेशन अरेंज करने का अपने ट्राई करते हैं. आज ही ट्राई करें या फिर कल करें आज कर 2025 सकते का. हैं, कल कर सकते हैं, आज तो ऑलरेडी हो गया, तो 2025 के ऑलरेडी 1 घंटे तो दे दिए, कल कर सकते हैं, मतलब करना है. ऐसे रात को ट्राई करते हैं. खाना कब, खाना खाना कब हुआ? जब करेंगे उसमें कुछ नहीं, वो मैं शिफ्ट कर लूंगा, उसमें कुछ कर लूंगा. ठीक है, तो फिर 9:30 का ट्राई करते हैं 2025 के लिए. मेरे ख्याल से 2026 की कोई क्वेरी है नहीं. मैं तो अभी मतलब आके मैं खाया नहीं हूँ, मैं अभी मतलब आके खाया नहीं हूँ अभी तक, मतलब बैठा है अभी तो. हाँ. ठीक है, तो फिर 9 o'clock कर सकते हैं क्या, अगर डिनर हाँ, वगैरह का इशू ना हो तो. तू जब बोलेगा उस प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है फिर. ओके देन वी ओके, कैन थैंक यू गाइस, end this एंड द session. सेशन We नाउ. will come for 2025 guys with another session. Okay. या Yeah, thank you.